Hello बच्चों, let's read the question. Using integration, find the area of the region, the set containing the points xy such that 9x squared plus y squared is less than or equal to 36 and 3x plus y is greater than or equal to 6. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concept for this problem. And the key concept for this problem is area between the curves, say fx and gx, such that fx is greater than or equal to gx for values of x in the interval a to b, and the area for this interval is a equals integral a to b of fx minus gx times differential dx. Now with the help of this key concept, let's now start our solution. अब question में we are given the region, say D is set of points xy in R2 such that 9x squared plus y squared is less than or equal to 36 and 3x plus y is greater than or equal to 6. अब जो condition 1 है that represents the point xy which is in the interior of an ellipse with an equation 9x square plus y square equals 36, while the equation 2 represents the points xy such that 3x plus y is greater than or equal to 6, that is above the line 3x plus y equals 6. Now let's try to draw the graph and mark the region D. So the boundaries we have is, first boundary we have is 9x squared plus y squared is equal to 36. If we divide by 36 throughout, we get x squared by 4 plus y squared by 36 equals 1, and we can rewrite this equation by x square by 2 square plus y square by 6 square equals 1. Now let's try to draw the graph of this curve. So suppose here we have x-axis, this is y-axis, here we have point of origin. Suppose this is 1 and this is 2. Here we have minus 1, minus 2. Now moving ahead, here we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In the negative y-axis we have minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 and minus 6. So now, since this equation represents an ellipse and the graph will therefore look like this. Such is the graph of the ellipse represented by equation 9x squared plus y squared equals 36. And the second boundary we have is 3x plus y equal to 6. And now let's construct the graph of this line. And clearly this line passes through point 2, 0 and 0, 6. So therefore the graph of the line is like this. So such is the graph, and here the equation of the line is 3x plus y equals 6. So therefore the concerned region, जो concerned region है हमारा, वो ये येलो region रहेगा. And इस ग्राफ से हम clearly देख सकते हैं कि this region D is bounded by the curves 9x square plus y square equals 36 and 3x plus y equals 6, right? And so therefore let's now get the area of region D. Therefore area of region D will be equal to, and now to get the area of region D, we first have to get the equation of this portion of the ellipse. And the equation of this portion is, since here we have y positive, so the equation will be y equals
square root of 36 minus 9x squared. And so therefore area of region D will be equal to integral of, see, x ranges from 0 to 2, right? So the limits are 0 to 2. The upper boundary is y equals square root of 36 minus 9x squared. So here we have square root of 36 minus 9x squared minus the lower boundary is the straight line y equal to 6 minus 3x. So यहाँ आ जाएगा 6 minus 3x whole times differential dx. And now let's evaluate this integral. तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 2. यहाँ से हम 9 को कॉमन लेके स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं. तो यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6 प्लस 3x होल टाइम्स डिफरेंशियल dx. अब आगे इंटीग्रेट करने से पहले रिकॉल दैट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड dx इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला क्या था, x बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड बाई 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x by a plus integrating constant c. And now we will use this formula. So this integration will be equal to 3 times integral of 0 to 2 square root of 4 minus x squared times dx minus integral of 6 times dx plus integral of 3x times dx. Limits 0 to 2. Here again 0 to 2. Now let's evaluate the integral. And so therefore area will be equal to 3 times. अब इंटीग्रेशन को इवेलुएट कर लेंगे. यहाँ है इंटीग्रेशन ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, दैट इज 2 स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड. यहाँ a आ जाएगा 2, तो वैल्यू इज x बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड, a is 2, a स्क्वायर्ड is 4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x बाय a is 2. फिर आगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6, सो दैट इज 6x, से आ जाएगा माइनस 6x. एंड लास्ट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 3x एंड दैट इज 3x स्क्वायर बाई 2. सो दिस इज प्लस 3x स्क्वायर बाई 2. एंड लिमिट्स है, लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2 तक. अब अपर लिमिट लगा लेंगे. यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स 2 by 2 that is 1 times 4 minus 4 that is 0 plus twice of sine inverse of 1 minus 6 times 2 that is 12 plus 3 times 4 divided by 2 आ जाएगा 6, राइट. सो ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर क्लोज. फिर माइनस माइनस द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0. सो फाइनल वैल्यू हियर वी हैव इज 6 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज पाई बाई 2 माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 12 प्लस 6 आ जाएगा. सो हियर वी हैव 3 पाई माइनस 6 and we can rewrite this as 3 times pi minus 2 square units. And so therefore area of region D is equals to 3 times pi minus 2 square units. And so this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.